Good morning. Today we are discuss about MHD, which is the new chapter of your course in non-conventional and renewable energy sources. Is the full form of MHD is magnetohydrodynamic power conversion. This MHD power generation is a device which converts the kinetic energy, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी just like a thermal power plant. In this chapter, we are discuss about the MHD. The MHD power generation is a device which converts the kinetic energy of the conducting electrical material. Means that our total energy actually convert होगा electrical energy पे. तो how it possible na flow in the presence of magnetic field directly into electrical energy. In a practical MHD generator, the energy of motion of conducting field is derived from heat obtained by the burning of fossil fuel. ठीक है, this is important. And burning of fossil fuel, this is generated. Thus heat is converted directly into the electrical energy. Faraday demonstrated the principle of MHD generation in 1836 by conducting of an experiment on the Thames River, because the water of the Thames is salty if it has a certain conductivity. The conducting fluid interacts with the Earth's magnetic field to produce a small current through electrodes concentrated across the blanks. Conventional electromagnetic power converters use the same principle. However, instead of using a solid metal, a conducting fluid is utilized in MHD generation. अच्छा, basic principle of MHD generation is, let a conducting gas having a conductivity of rho, actually रो नहीं है, ये है एक्चुअली सिग्मा है, मो पर मीटर. मूव्स मतलब conductivity जो है ना, conductivity moves at a speed u across the magnetic field B. The speed, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ, जो हम लोगों को कौन सा मिला ना, conductivity G से हम लोग conductivity को रिप्रेजेंट करते हैं. G जो है मो पर मीटर, मूव्स एट ए स्पीड, कैसे ना, U से डिनोट कर रही हूँ, जो स्पीड जो है, ठीक है. अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है B, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड. U है स्पीड, G है क्या है ना, कंडक्टिविटी,
जी है conductivity, U है तो speed, B है तो magnetic field, ठीक है। और जो है the speed U and magnetic field V are held mutually perpendicular along x axis and y axis respectively, ठीक है। तो the electrodes having areas A are held at the distance D along the z axis। यहाँ पे देखो ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, ये ऐसे ही, सॉरी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ बट तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे ये सब डिनोट कर रहा है ये तीनों को, जैसे यू बी एंड ये जो यू एंड बी को जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे डिनोट कर रहा है, और डी जो डिस्टेंस जो है वो जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो दस द परपेंडिकुलर टू द बोथ यू एंड बी एज सुन, यहाँ पे देखो एक फिगर जो है, एक फिगर जो है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे देखो एक्चुअली एक्स वाई यहाँ पे जेड, ठीक है। तो ये जो है ये एक्चुअली ऐसे ऐसे ही होगा, ये जो एक्सिस को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज्ड particles will be called by the upper electrodes and negatively charged particles by the low electrodes, causing the potential difference V across them. The resulting of electric field between the plates is given by E is equal to minus V by D. If सो यहाँ पे देखो जो एम एच डी जनरेटर जो है, एम एच डी जनरेटर एंड एम एच डी जनरेटर इज ए divergent channel or duct made of a heat resistance alloy as shown in यहाँ पे देखो एक यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ एक्चुअली इतना ये है, ठीक है। ये जो है जो ये जो जनरेटर है, ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट राइट एट एंगल टू द चैनल लेंथ and conducts are provided right angle to both the magnetic field flow of gas. A conducting fluid मतलब जो आयोनाइज जो गैस है ना, तो वही it is forced into the other MHD channel at a high speed and a high temperature through a nozzle. It explained as it moves forward and leaves the duct and lower temperature and pressure. In this respect, and MHD converts system is a heat engine which receives heat at high temperature, converts a part of it into useful works, ठीक है। यहाँ पे the efficiency of MHD it a converter along is about 20 to 25%, and in practice however an MHD converter is never made to operate alone.
The exhaust of an MSD system is used to rise system for a conventional system plants. Thus, by using MSD as a topping cycle for the conversational system, an overall efficiency of 50 to 60% should be possible. This is the generating system. And now we are discuss about it reduced conducting to two ways. Is by one is the by inducing in the ionization in the working fluid, and another is by incorporation a liquid metal into following carrier gas. ठीक है. अच्छा, advantage of MSD is what is the advantage of MSD? एक्चुअली MSD का जो एडवांटेज जो है वो बहुत सारा पॉइंट्स से है. Conversion efficiency of MSD steam hybrid plant may be as high as around 50 to 60%. The fuel is better utilized. Next, MSD generation uses the no moving parts, and therefore all problems the limitation and the limitation across also with it arc also absence. The MSD unit is capable of rapid stating. The fourth point is lower emission of pollutant due to better pollution control. An MSD plant is compact and required comparatively less space. And another section is एक्चुअली तुम लोग यहाँ पे भी ये सब देखो एक बार ओपन साइकिल MSD जनरेशन सिस्टम. और मैं यहाँ का जो डिसएडवांटेज भी है जो MSD सिस्टम का वो भी मैं बोल रही हूँ. MSD generation has some serious limitation. The most important among them are the number one, very high operating temperature resist the choice of the material for various equipments. Sorry. Number two, life is equipments is short due to high temperature stresses. Number three, the output power is available as DC conversion is required for integrating into a grid. The number four is there are technical limitations and so on enhancing the fluid conductivity and the strength of magnetic field. इन MSD सिस्टम देखो दो तरह का मेनली यहाँ पे लूप के हिसाब से ये दो तरह का होता है. एक है ओपन साइकिल एंड दूसरा है क्लोज साइकिल. ठीक है. तो यहाँ पे देखो ये जो ओपन साइकिल जो है ना, ओपन साइकिल पे क्या है ना, द मेन फीचर्स ऑफ द एन ओपन साइकिल सिस्टम आर सुनिन. यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक ओपन साइकिल सिस्टम है. ये है ओपन साइकिल सिस्टम का पिक्चर. ठीक है. देखो ये एक ओपन साइकिल सिस्टम का है और ये दूसरा जो है ये है क्लोज साइकिल सिस्टम का है. ठीक है. MSD सिस्टम का. अच्छा, और एक बात है यहाँ पे जो ओपन सर्किट सिस्टम और क्लोज सर्किट सिस्टम का डिफरेंस तो थोड़ा सा तुम लोगों को समझ में आ ही रहा है दोनों पिक्चर को देखकर.